First of all, good morning to all of you. Let us start today's topic. First of all, by the grace of great Michael, let us start. The today's topic is optical joint density of a state. Optical joint density of a state. But before going to start the session, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ आपसे, because मैं आज आपको दिल से बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ. I really thanks to from the bottom of my heart to all the students, to this college, to my GNE college, and all the faculty members and all the students inside the college, outside the college, and my friends, my special friends, all the people जो हमारे लिए blessings करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया from the bottom of my heart. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Let us start from optical joint density of a state. Optical joint density of a state. See, in the starting, in the laser, first of all, I would like to start from the topic laser. What is the full form of laser? Light amplification by stimulated emission of radiation. एक बार और. Light amplification by stimulated emission of radiation. See, for the laser action to take place, there are two kind of processes. There are two kind of process that is possible. ठीक है. First is called absorption process. First is called absorption process, and second is called emission process. ठीक है. This is called absorption, and this is called emission process. ठीक है. By the absorption process, what will happen? What will happen बेटा? ठीक है. What will happen? We supply photon of energy band gap energy, that is E2 minus E1 to the atoms present in the ground state. What will happen? Atoms absorb the energy and shift to the excited. This process is called absorption process. ठीक है. Once they get once they reach to the excited state, what will happen? After certain time they will de-excite. Because lifetime of this state is very small. So this process is called emission. When the atom de-excites spontaneously, this is called emission. Further, emission consists of two types. One is called spontaneous emission, another is called stimulated emission. But in the laser, the stimulated emission dominate. The stimulated emission dominate over the spontaneous emission. I think this is the overall story about the laser. I think we have repeated this thing a number of times. ये तो आपको पता ही होगा सभी को. ठीक है. Patience. Are you getting the point, बेटा? See, we have done this thing a number of times. Emission दो तरह का होता है. One is called spontaneous, another is called stimulated. Now I have to find out the optical joint density of states. ठीक है. Density of states हमने शुरू में किया था. What is density of states? Number of states क्या था? dn upon d. क्या था? Density of states क्या था बेटा? d2s क्या था? dn upon number of states present in the unit energy interval E to E plus d. I mean to say delta E energy level में how many number of states are present? And we have calculated for the one dimension, for two dimension, and for the three dimension. Are you getting my point? समझ आ रहा है? Patience. Are you getting the point? See, density of states we have done in the unit 2 also. So similarly, see, this is called a valence. This is called a conduction. There are number of levels in the valence band. Similarly, there are number of levels in the conduction band. So it means there are number of pairs. There are number of pairs from which the absorption can take place. For the sake of simplicity, I have taken this level. This level is, let us suppose, E1, and this level is, let us suppose, E1 to E2. And what kind of energy of this photon possess? E2 minus E1. E2 minus E1. So friends,
this transition can also possible. You can take this transition from this. ठीक है? So any number of, so there are a number of pairs possible. So there are a number of pairs possible for transition from valence band to the conduction band. But what is the important thing? जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ट्रांजिशन के लिए एनर्जी बेटा कितनी होगी, कितनी होगी बेटा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी द फोटोन पोजेस, कितनी होगी? कितनी होगी? h nu is equal to E2 minus, ठीक है, h nu is equal to E2 minus, are you getting my point? See this energy difference कितनी होगी बेटा? इन दोनों का डिफरेंस, पेशेंस, E2 minus E1. What is the photon? What is the energy of this photon? E2 minus E1. See there are number of transitions are possible like this, ठीक है, like this. So you can take any one of them. You can take any one of them. But the important point is that the transition is possible only when the energy of the photon will possess will hold this condition, where h nu is equal to greater than or equal to Eg. What is Eg? It is called Eg is equal to band gap energy. समझ आ रहा है बेटा? काफी स्लो चल रहा हूँ आज में, ठीक है? h nu is equal to, ठीक है? एक्चुअली आज मुझे आपका दिल से थैंक्स करना था, बिकॉज दिस वुडंट बी पॉसिबल विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड एंड मोर इम्पॉर्टेंटली the kind of the support we are getting from you. I think it's commendable. I think I'm nothing basically. It's all grace of God, and thank you once again. I thank you from the bottom of my heart. ठीक है? मतलब अच्छा लग रहा कि हम असेंबल हुए ना, हम सभी इकट्ठे हैं, तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू दी गॉड। रात एक येस्टरडे नाइट एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा कि उनकी फीडबैक बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत इमोशनल कर दिया एक्चुअली। तो वंस अगेन आई रियली थैंकफुल टू यू, ठीक है? So there are number of pairs possible. So we can take any one of the pair. We can take any one of the pair, and more importantly, whatever the pair we can take, whatever the pair we will take, the incident photon, the energy of this incident photon must possess this condition. H nu must be greater than or equal to Eg. H nu must be greater than or equal to Eg. आपको समझ आ रहा है? Patience? Are you getting the things? I think this is quite easy. I think we have done number. Now what will happen once the transition is it means for the transition, for the absorption, there must be a one state in E1 in the valence band E1, and there is one state in the conduction band E2. It means we require two states. One is E1 and another is E2. Similarly for the de-excitation or emission, there are two states we require. One must be available in the conduction band, and one must be available in the valence band, and that is designated as a E2 prime, and in the valence band it must be designated as a E1 prime. And when emission will occur, what will happen? The photon of energy E2 prime minus E1 prime is equal to h nu prime must be emitted. So this is the overall story. This is the overall story about the absorption and emission. दोस्तों ये एक overall story है, कहानी है जो कि इसके पीछे होती है. So I think we have बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमने बताया. हम देखेंगे कि इसकी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है? इट इज टोटली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. आई होप कि आप सब इंजॉय करोगे, ठीक है? तो सी लेट अस से, अब देखो बेटा, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द कंडक्शन बैंड. दिस इज एनर्जी, दिस इज द वेव वेक्टर, दिस इज द वेव वेक्टर. नाउ हमारा जो E2 एनर्जी है, ठीक है, we have the E2 energy state that is lying at this point. Now we want to write the equation. ठीक है? आप खुद ही लिखोगे, मैं आपको हिंट दूंगा. I will give a hint to you and you will automatically derive a equation. है? See, this is called what is EC beta? What is EV? Whole potential energy. What is EV? Whole potential energy. What is EV? Potential energy of whole. Potential energy of a whole, and that is taken as a constant. So I can write as a constant. I can write here as a constant. Similarly, EC. What is EC beta?
That is a potential energy of a. That is also taken as a constant. And out. It means this is the potential energy of hole. This is potential energy of electron. और ऊपर की तरफ क्या होगा? Kinetic energy of electron. नीचे की तरफ क्या होगा? Kinetic energy of hole. ये हमने पढ़ाया था ना पहले यूनिट में, है ना? Any doubt? No sir. Now please write. See, अब मुझे E2 की एनर्जी निकालनी है बेटा. E2 is equal to क्या होगा? E2 is equal to क्या होगा? EC this level plus this much of energy plus this much of energy. But we really don't know what is this amount of energy. We really don't know what is this amount of energy. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम assume करते हैं कि हमारी जो कर्व है वो क्या होगी? पैराबोलिक. वो क्या होगी? पैराबोलिक. So we will take the parabolic approximation. See, मैंने यहाँ पे एक पैराबोला बनाया. बना कि नहीं बना? दिख रहा है आपको? This dotted is called a parabola. This dotted is called a ये बना. This dotted is called a बेटा parabola. This is called a parabolic approximation. Parabolic approximation. So now we know the energy for the parabolic approximation. हमने पता है ना? What is the energy of the electron for the parabolic approximation? In the first unit we have calculated what is the energy. E is equal to क्या होता है बेटा? E is equal to h cross square upon 2m. याद है कि नहीं याद है? This is energy for the free electron. This is energy for the Free electron. कैसे निकाली थी? याद है कुछ? निकाल के बताओ. So that you need not to cram the things. ठीक है? एक बार दोबारा निकाल देता हूँ. E is equal to क्या होता है friends? E is equal to 1/2 half mv square. क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होगा? Kinetic energy का रोल होगा ना? ठीक है? So what I will do friends, I will multiply by m and divide by m. Is any kind of difference we will see? No. We will not see any kind of difference. When m will get cancelled with this. See, this mv is called momentum. mv is called a ठीक है? p square upon 2. p square by number 1. p square upon 2m. ठीक है? ठीक है तो बच्चों? Patience. ठीक है? Are you getting the point? E is equal to kinetic energy half mv square. I multiply by m divided by m, and this p is equal to momentum. This p is equal to momentum, mass into velocity. Mass into velocity. Now we know de Broglie relation. पता कि नहीं पता? Yes sir. Lambda is equal to h over mb. Lambda is equal to h over mb. Or h upon p. So it means p is equal to कितना है बेटा? H upon lambda. h upon lambda. So can I write like this? Upon lambda 2 pi. Yes sir. This h upon 2 pi is called beta? H cross. Shabash, h cross. What is h cross? Reduced Planck constant. And what is 2 pi by lambda? It is called k. It is called a k. P is equal to h cross k. And out. No sir. So please use 2 in 1. ये सारा नोट में लिखना, ठीक है? वैसे भी लिख सकते हो, है ना? Use 2 in 1. Use 2 in 1. तो बेटा कितना आएगा? E is equal to h cross square upon 2m. This is equal to the energy of electron. ऊपर लिख दो यहाँ पे. E is equal to h cross square by 2m. You are from section A. You are from section A. New student for the section C. H cross square k square upon 2m. So this is the energy of the free electron for the parabolic approximation. For the parabolic approximation. For the parabolic approximation. ठीक है? अच्छा, अब आप बना सकते हो? अब आप बना सकते हैं ये इक्वेशन? Yes sir. Now I think can I rub this diagram? Yes sir. अब इसका काम हो गया है, ठीक है? और हमने समझ लिया कि ये क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है? Can I rub this? वैसे इसको मन नहीं कर रहा रब करने का. बहुत अच्छा सुंदर डायग्राम बना है, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, बट करना पड़ेगा ना? कर दे? Yes. दीपिका कर दे? पेशेंस. बेटा लिखो, what will be the equation बेटा?
E2 इज इक्वल टू EC, E2 इज इक्वल टू EC, क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस, प्लस, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, H क्रॉस स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2M अपॉन 2M C, C for conduction band, where MC is called effective mass, where MC is called effective mass of electron in a conduction band, in a conduction band, in a conduction band, ठीक है. Similarly for the valence band बेटा आप लिख सकते हो, valence band के लिए लिख सकते हो आप, ये था ना वो, सॉरी, for the valence band this is E1, this is a E1 है ना, दीपिका यही है ना, पेशेंस, this is E1 and this is EV, तो राइट द इक्वेशन, क्या आएगा, E1 is equal to EV प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस, शाबाश, माइनस, मैंने कहा था ना आप खुद लिखोगे, कहा था ना खुद लिखोगे, because once you get the topic it is automatically understood. EV minus, what is the value beta, H cross square upon K square into 2mv. What is mv, effective mass of electron, yes, effective mass of electron in a valence band. And third equation is H2 is equal to E2 minus E1. Give it equation number 2, 1, 3. ठीक है, दोबारा बता देता हूँ. What is MC बेटा? MC is called effective mass of electron in conduction band. MC is called a effective mass of electron in conduction band, and MB is called a effective mass of electron in a valence band. In the valence band. क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ठीक है, अभी 2 लाइनें लिख लें, जहाँ करें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें. तो पहले 2 लाइनें लिख लो आप. देखो, फॉर ए गिवन एनर्जी h न्यू, पहले लिख लो. For a given energy h nu, for a given energy h nu, तो यहाँ पे कोई प्रॉक्सी बोलेंगे पैराबोलिक है ना. For a given energy h nu, comma, for a given energy h nu, comma, there are several pairs of E2 minus E1. जो हमने कहा था ना, ट्रांजिशन हो सकती है. There are several pairs of E2 minus E1. There are several pairs of E2 minus E1, and so there are number of pairs, and so there are number of pairs of states, and so there are number of pairs of states available for. And so there are number of pairs of states available for photon of energy h nu, available for photon of energy h nu to interact, and this is given by density of states, and this is given by density of states. So there are number of pairs of states available for a photon of energy h nu to interact, and this is given by density of states. अभी definition लिख लीजिए पहले. The joint density of states
gives the definition. If definition will come in the 2 marks, then you can write this point, this definition. The joint density of states, the joint density of states, the joint density of states gives the number of pairs of states, number of pairs of state. पेयर चाहिए ना बेटा, एक वैलेंस बैंड पे चाहिए, एक कंडक्शन बैंड में स्टेट चाहिए, तो पेयर हो गया ना, जोड़ा हो गया ना. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टेट्स ब्रैकेट में लिखिए, वन इन वैलेंस बैंड एंड वन इन कंडक्शन बैंड, वन इन वैलेंस बैंड, वन इन कंडक्शन बैंड, ब्रैकेट क्लोज. Number of the joint density of states gives the number of pairs of states, bracket start, one in valence band and one in conduction band, bracket close. Per unit volume, per unit photon energy interval, per unit photon energy interval, whose energy difference is equal to h nu, whose energy difference is equal to h nu, whose energy difference is equal to h nu. Can you have this? Yes, sir. So देखिए concentration of electrons. So concentration of electron in conduction band is given by, हाँ जी, what is the formula? याद है आपको? So concentration of electron in conduction band is given by, आकृति, what is the formula? Ne. N is equal to क्या होता है? N is equal to integration of ZCE into probability factor FEDE. याद है आपको? सेकेंड यूनिट में किया था. N is equal to ZCE into FED. याद है कि याद है आपको? ठीक है. Similarly, concentration of holes in valence band is given by, क्या होगा बेटा? NH is equal to क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ZVE multiply by occupation probability. If the probability of finding the electron is Fe, then the probability of finding the hole is 1 minus Fe. 1 minus बेटा, अगर बारिश होने की संभावना, बारिश होने की probability 1/3 है, तो बारिश नहीं होने की कितनी होगी? 1 minus 1, 1/3, that is equal to 2/3. That is equal to 2/3. Are you getting the point? That is equal to 1 minus Fe into D. ठीक है बेटा? This V stands for the valence band, C stands for the conduction band. This is concentration of electron in conduction band. This is concentration of holes in the valence band. And these two equations we have done in the unit 2. ठीक है? This is just for the understanding. याद है कि नहीं याद है आपको? याद आया कुछ? Now let us again come back to these equations. ठीक है? See बेटा, use 1 and 2 and 3. अब इस equations पे आ जाओ. Use 1 and 2 in equation 3. Can I wrap this? Use 1 and 2. Use 1 and 2 in 3. Do by yourself. Please do by yourself. I will do here. What is E2 beta? EC plus H cross square K square upon 2MC minus EV minus H cross square K square upon 2. ठीक है बेटा? That is equal to EC minus EV plus कितना है बेटा? H cross square K square upon 2MC minus plus H cross square K square upon 2MP. This EC minus EV is called beta EG.
इट्स कॉल्ड अ है ना बैंड गैप एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी क्या है? फॉरबिडन और बैंड गैप एनर्जी, ठीक। प्लस व्हाट इज कॉमन? h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2 m इज कॉमन एंड 1 by mc प्लस 1 by mv, ठीक है। वो तो MCM भी वेरी गुड। h क्रॉस स्क्वायर का मतलब सभी याद रहे हैं, h क्रॉस स्क्वायर बाय k स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो सी बेटा यहाँ पे लिख लो EC माइनस EB इज इक्वल टू G EG एंड 1 by MR इज इक्वल टू 1 by MC प्लस 1 by MV where MR is called a reduced mass, MR is called a reduced mass। हम आपको रोटेशन मोशन में करवाते कि नहीं करवाते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम में, याद है आपको? अगर टू बॉडी प्रॉब्लम में होता है तो क्या होता है? 1 by mu is equal to 1 by m1 plus 1 by m2। m1 is the mass of the first object, m2 is the mass of the second object, and what is mu? Mu is called a reduced mass, mu is called a, you might have done the rotational motion, आपने rotational motion में इसको यूज किया। तो सिमिलरली 1 by mr is equal to कितना फ्रेंड्स? 1 by mr is equal to 1 by mc plus 1 by mv where mr is called a reduced mass, mr is called a reduced mass। EG is called a forbidden energy है, ED is called a forbidden energy। एंड आउट बेटा, No, sir. तो प्लीज यूज दिस। तो कैन यू रख दिस? Yes, sir. हाँ जी, कितना आया कृतिक बताना मेरे को। HV equals to एच न्यू कितना आया? EG plus EG प्लस एच क्रॉस k स्क्वायर अपॉन 2 mr। From here find out the value of k square, find out the value of k square। h nu minus EG is equal to h cross square k square upon 2 mr। Yes, sir. So what is k square? K square is equal to 2 mr upon h cross square h nu minus EG। And out बेटा, this is question number बेटा, हाँ जी। Using 4 in 1 and 2, using 4 in equation number 1 and 2 we get। हाँ जी बेटा, what is one equation? क्या थी बताना मेरे को। What is equation number 1 क्या थी? E2 is equal to क्या था? E2 is equal to EC plus h cross square into k square क्या है? 2 mr upon h square into h nu minus EG क्या था? h square by 2। प्लीज लिखिए इसको, ठीक है? देखिए, ठीक है जरा, हैं? कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? हो रहा है। h क्रॉस स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, E2 is equal to EC plus mr by mc h nu by give this equation number 5। please write, ठीक है? सी हाँ जी बेटा, EC क्या है? कांस्टेंट। EG क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो इन इक्वेशन नंबर 5, EG EC, इक्वेशन नंबर 5 EG कॉमा EC, EG कॉमा EC कॉमा MR कॉमा MC are constants। तो वेरिएबल क्या है? E2 and mu are variable, E2 and mu are variable, E2 and mu are variable। H is also constant, ठीक है? EG is also constant, EC EG MR MC। so differentiate equation 5, differentiating equation 5 with respect to mu both sides we get। हाँ जी बेटा करो।
क्या आएगा, क्या आएगा, डी ई टू बाई डी म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी अपॉन डी म्यू ऑफ ई सी प्लस डी अपॉन डी म्यू ऑफ एम आर बाई एम सी एच म्यू माइनस, इसका क्या है बेटा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस एम आर बाई एम सी कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड द डेरिवेटिव, यू कैन टेक आउटसाइड द डेरिवेटिव, तो क्या आया एम आर बाई एम सी, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, एच न्यू का, न्यू कितना आया, न्यू, क्योंकि ड्यू में ये ऐसा हो जाएगा ना, एच इंटू डी न्यू बाई डी न्यू माइनस एम आर बाई एम सी इंटू डी अपॉन डी न्यू ऑफ ई जी, ठीक है बेटा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना आया 1, इसका कितना आया, इसका कितना आया 0, Eg is constant and derivative of constant quantity is always a 0, तो de2 upon d mu कितना है बेटा, mr upon mc into h, mr upon mc into h, we will use this equation, we will use this equation. Similarly use 4 in 2, use 4 in 2, can I rub this? Anji, what is the equation? 4 into E1 is equal to EV minus H cross upon 2 MV, यही था, 2 MV into K square, ठीक है, कितना है बेटा, E1 is equal to EV minus MR upon MV HV minus EG. बेटा give this equation number, कहाँ तक पहुँचे बेटा, इस क्वेश्चन को उसका क्या था, उस लास्ट वाले को कितना दिया था हमने, 5 दिया था, इसको दे दीजिए 6, इसको दे दीजिए, ठीक है 6, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, तो देखो दैट इज, इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई है ना, वो मेरे को लिखाना 6 वाली इक्वेशन कौन सी है, 5 वाली, E2 is equal to EC plus MR by MC H mu minus EG, 5. See, so there is a one-to-one correspondence relation between E1 and mu and E2 and देखो, so there is a one-to-one correspondence between E1 and mu. What is mu? Frequency. And E1 and mu and E1 mu and ठीक है, रिलेशन है ना, सी E1 and mu and E2 and this one-to-one relation. Can I rub this beta? Yes, sir. So we have ZCE2 into DE2 is equal to Z nu dnu, ठीक है, density of state, this is a density of states, this is density of states in energy range, ठीक है, this is a density of states in the energy range DE2, and this is for the conduction band, this is for the, because C denotes the conduction band, this is density of states for the conduction band in the energy interval DE2, and this is the density of states, this is the density of states in range in DU, in the range DU,
in the range d nu, it means हम z nu d nu को क्या कह सकते हैं? It is the, देखिए, it is the number of states, per unit volume, available for photon of energy h nu, between h nu and h nu plus nu. ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेंज डेल्टा न्यू का मतलब क्या है कि न्यू एंड न्यू प्लस डेल्टा न्यू के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ये उसकी रेंज है. ठीक है, so we can also call it as a z nu d nu is called a photon density. It's called a photon density. To interact, absorption or emission. ठीक है फ्रेंड्स, absorption or emission. So from this, give this equation number 8. So from equation 8, we have z nu. Z nu is equal to zc into dE 2 upon dU. Give this equation number. Akriti, what is this like? Huh? 9. It is also called the optical joint density of states, or OJDOS. This is we have to find out. Z nu. ठीक है, ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ठीक है बेटा, dE2 upon dE nu we know, we have calculated, and then we will use the direct relation. We will use the direct relation from the ZCE2 from the unit 2. So ZCE2 is equal to 1 upon 2 pi square to mr upon h cross square की पावर 3 by 2 into E2 minus EC की पावर 1 by 2. 1 by 2 pi square 2 pi mc, because we are doing it for the conduction band. We are find the density of state for the conduction band. 1 by 2 pi square into 2 mc upon h cross square की पावर 3 by 2 into E2 minus EC की पावर 1 by 2. ठीक है, ठीक है बेटा. ओके, now we have to find out E2 minus E1 EC, and now I have to find out the E2 minus EC. Give it equation number 10. See, we know that E2 is equal to क्या रिलेशन होगा बेटा? E2 is equal to EC प्लस क्या रिलेशन है? E2 is equal to EC प्लस MR कॉन MC. देखना यही होता है आकृति. H2 minus EG, MR कॉन MC है ना. ठीक है, तो E2 minus EC क्या आ गया? E2 minus EC is equal to MR upon MC into H minus EG. Taking square root both side. Taking square root of equation 11 both sides, we get क्या आएगा कृति? Patience. What's the square root? E2 square. Square root का मतलब होता है 1 by 2. E2 minus EC की पावर 1 by 2 is equal to MR upon MC की पावर 1 by 2. H nu minus EG की पावर
Any doubt? No, sir. Give it a question number. 12. DE2 upon DU is equal to this कितना होता है वैल्यू H क्या थी वैल्यू बेटा बताना H MR by MC यही था ना what is this equation number 6. 6 6 using 6 and 12 in 9 using 6 and 12 in 9 6 and 12 in equation 9 we have क्या आएगा बेटा Z nu is equal to बेटा क्या आएगा बताना मेरे को आप बताइए क्या आएगा 1 by रुकिए नहीं सबसे पहले लिखिए यूजिंग 10 and 6 यूजिंग 10 and 6 सॉरी यहाँ पे लिखिए 6 and 10 and 6 10 and 6 in 9 सबसे पहले 10 and 6 in 9 फिर देखते हैं कितना आया 1 by 2 pi square 2 MC upon h cross square 3 by 2 E2 minus EC की पावर 1 by 2 into बेटा हाँ जी what is 6 H MR by give it equation number 30. ठीक है now use equation number 11 then sorry 12 and 13 now use 12 because I have to find I will use this value use equation 12 in 13 we have क्या आएगा बेटा मेरे को लिखाना बेटा क्या आएगा मेरे को वहां से दिख नहीं रहा Z mu is equal to 1 by 2 pi square 2 MC upon h cross square की पावर 3 by 2 into what is E2 minus EC बेटा MR by MC की पावर 1 by 2 into h nu minus into h nu minus h nu minus EG की पावर 1 by 2 into h MR by ठीक है बेटा कैन आप दिस आई थिंक अब इसकी जरूरत नहीं है बस सॉल्व हो गया करो इसको कितना आया आंसर सेट न्यू इज इक्वल टू कितना आया 1 by क्लब करो बेटा क्लब कीजिए टर्म्स MC की पावर सी ये MC की पावर 1 by 2 है ये MC की पावर 1 है तो कितना आ गया ये आ गया 2 MC की पावर चलिए इसको लिखिए 2 की पावर 3 by 2 MC की पावर 3 by 2 ठीक है इसको लिखो MR की पावर 1 by 2 into MC की पावर 1 by 2 ठीक है बेटा ये क्या आया H क्रॉस स्क्वायर की पावर 3 by 2 ठीक है बेटा H nu minus EG की पावर 1 by 2 into H MR by MC ठीक है देखो ये H क्रॉस नहीं आएगा मैं क्रॉस डाल रहा हूँ ये क्रॉस नहीं आएगा देखो इधर इसको सही करो क्रॉस नहीं आएगा पहले भी क्रॉस डाला देखना ये क्रॉस नहीं आएगा रुकना ठीक है कीजिए इसको देखो क्या आया
ये एमआर ही आ रहा देखना, Yes, sir. एमआर ही है, Yes, sir. हैं? Yes, sir. हाँ यहाँ पे भी क्या है ना, ये एमआर की पावर 1/2 प्लस 1 कितना आया 3/2, कितना आया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये एमसी की पावर 1/2 एमसी की पावर 1 क्या क्या आया MC power 3/2, ठीक है। तो कैंसिल कीजिए, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, Sir, ये X cross है. देखते एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे करो, यहाँ पे दिस इज नॉट एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। But sir, वो section जब हम related है. नहीं वो रिलेशन में ही है, डायरेक्ट रिलेशन में ही है, हमने गलत, But सब कौन से वाला, कौन से वाला, ये वाला, नीचे. Today's कौन से वाला, ये वाला, ये दोनों क्लब हो गए ना, ये तो क्लब हो गए, 2 की पावर 3/2 एमआर की पावर 3/2 ये क्लब हो गए, ये वाला, ये 2 से 2 कैंसिल, H3 2 से 2 कैंसिल, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया देखो, Sir, फिर भी तो यहाँ पे H square काट रहा है. तो ये ऐसे कैंसिल हो गया देखो, H स्क्वायर आ गया 1/2 पाई स्क्वायर H स्क्वायर, But sir, जो हमने K square के equal to निकाली, उससे भी H cross आ रहा है. नहीं ये यहाँ पे रिलेशन आया है, वो पीछे से तो H ही आ रहा है ना, पीछे से नो 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 सी H न्यू क्या आया था, उसका डेरिवेटिव देखिए, उसका डेरिवेटिव क्या आया था, H आया था, क्या आया था H, Sir, H. क्या आया था, यस, ठीक है, dE2 by dμ is equal to H mr by mc, ठीक है, समझ आ गया। इसमें चाहिए था ना, जो हमने तो 1/2 पाई स्क्वायर H स्क्वायर, so this is the question number, this is question number, please keep quiet. Equation 14 is optical joint density, Question 40 is optical joint density of states. Let us make a graph between Z nu. Wait, what is Z nu? Z nu is called the optical joint density of states. Z nu is called the optical joint density of states with respect to E. With respect to E, so graph would be like this. Please, this is EG. This point is a EG. And please write. Please keep quiet. For E greater than EG. For E greater than EG, absorption or emission. Please, absorption or emission take place. Absorption or emission takes place. So this is the end of the article. This is the end of the So this is the 8-mark questions that can be come in the exam. So what is ZU? This is called a optical joint density of states.
ऑप्टिकल ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. एनी डाउट? Any doubt? Any doubt in this part? Yes, sir. ठीक है. The rest, first of all, we have understand what is the basic physics behind it. After that, the whole work is accompanied by the mathematics. ठीक है. उसके बाद सारा क्या है? Mathematics है. So thank you for being with us. So this is the end of the article and the end of the session here. तो अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा. ठीक है. तो एक बार फिर अपने बच्चों के साथ ही विदा लेते हैं. ऐसे घुमा दो उसको. So thank you for being with us.